न्यूरल डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों में होता है. So let's start about it. Type of an individual reflects the growth and development of the body, nutrition, environment, and social and environmental determinants of the phenotype. Global development for disability क्या होता है? So global development delay is defined as delay in two or more of the following domains. दो या दो delay हो रहा है
neuromuscular disorder is a पेरीनेटल या फिर न्यूनेटल क्या हो सकता है हाइपोक्सिक सिस्टेमिक एंसेफेलाइटिस हो सकता है आफ्टर मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस के बाद ये सब हो सकता है हो सकता है थायराइडिज्म की वजह से हो सकता है सेटेन ट्रॉमा उसके बाद भी हो सकता है। तो पोस्टनेटल क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ और B1 और टॉक्सिन्स जैसे लेड जो होता है दैट आल्सो कॉजेस मेंटल डेविएंस। मैनेजमेंट क्या is managed by a multidisciplinary team comprising of a pediatric physiologist, psychiatrist, occupational and audiologist, ophthalmologist, nutritionalist to achieve maximum cognition and developmental potential. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है तो ऑटिज्म होता क्या है ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनको आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है वो अपने आप कांटेक्ट करके नहीं बोलेंगे एंड देन चलो डिसऑर्डर होता है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड ऑफ पेयर्ड ऑफ सोशल बिहेवियर ट्रायड है तीन चीज आएगा ठीक है फर्स्ट इज पॉलीफेज दूसरा क्या है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन दोनों ही कन्नड़ में दिक्कत होता है स्किल्स एंड एसोसिएटेड behavior pattern behavioral pattern with on साल से पहले ही ऑटिज्म estimated global prevalence is 1 इडियोपैथोजेनेसिस क्या है क्यों होता क्यों है ऑटिज्म तो पैथोजेनेसिस abnormality in neural connectivity migration dendritic and synaptic morphology function neurons have been implicated so genetic causes such as fragile tuberous sclerosis angel diseases जैसे कि phenylketonuria are hypothyroid percent of the cases so ये सब syndrome basically 90% we don't associate any autism so diagnostic approach क्या है statistical manual of mental health DSM 4 जो है require fulfillment of symptoms listed in 3 social interaction communication चीज में ऑटिस्टिक बच्चे को प्रॉब्लम होगा क्या सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा बिहेवियर जो है वो स्टीरियोटाइपिकल रेस्ट्रिक्टिव होगा some spectrum disorder so guidelines according to the DSM 5 have mediation domain into one AFC a child has to fulfill a minimum number of symptoms in टू डोमेन हो गया पहले DSM 4 में 3 डोमेन था अब 2 डोमेन हो गया कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर इन तीनों में 2 डोमेन में उसको फुलफिल करना symptoms comorbidities are shown in the table patients with developmental disorders जिनको भी developmental disorders होता है Sound is okay. Can you hear me now, Shashank?
मैंने पूरा ही पढ़ा दिया और मैंने साउंड का भी ध्यान नहीं दिया। हाय। बताया ऑटिज्म में ना ट्रायड होता है क्या? पहला तो सोशल होता है पर्सन बच्चे का, कम्युनिकेशन जो होता है वर्बल और नॉन वर्बल, स्टीरियोटिपिक रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पैटर्न होता है। तो तीन किस चीज में? पहला तो बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये तीन चीज जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है। अब ये 3 साल से कम में ही ऑटिज्म शुरू। ये होता क्यों है ऑटिज्म? सो ऑटिज्म जो होता है, एक सेकेंड लेट मी, ऑटिज्म जो होता है वो उसका क्लियर नहीं है इडियोपैथोजेनेसिस। नल कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेशन, डेंड्राइटिक साइनाइटिस न्यूरॉन्स का उसमें कुछ दिक्कत है, या फिर कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसे फेरोसिस, एंजलमैन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया और हाइपोथायरॉयडिज्म, जो ये सब होते हैं इस वजह से आते हैं ना। डायग्नोस्टिक क्या है? तो DSM-4 में ना 3 डोमेन्स था। बच्चे को होना था तभी उसको ASD में हम लोग, बट अब DSM-5 ने 2 डोमेन कर दिया है। दो पास करना है, मतलब फुलफिल करना है क्राइटेरिया को, तो वो किसी की कोमॉर्बिडिटी क्या होता है? पेशेंट विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिनको भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है। सो डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज जो होता है उनमें सीजर, विजुअल एबनॉर्मेलिटी, इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर, फीडिंग प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, स्लीप डिस, बेड सोर्स, ये सब आ सकता है क्योंकि लेटे हुए रहेंगे। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो सीजर होगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। फिर बाकी जो ADHD और ये सब है, ये कहते हैं कि ऑटिज्म को क्या होता है? सीजर हो सकता है, फीडिंग प्रॉब्लम, बिहेवियर में प्रॉब्लम, एक्टिविटी, इनअटेंशन, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। हाय मम्मी। हेलो। सो लेट्स सी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इन द इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंटल डिले। सो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? न्यूरो इमेजिंग, पहले तो ब्रेन को देखेंगे, MRI प्रेफर्ड ओवर CT क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है ब्रेन। सो हम लोग न्यूरो इमेजिंग करेंगे। सो MRI तो दो तरीके का होता है, T1 T2, और भी बहुत सारा होता है, बट T1 T2 वेटेड जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है दैट वी यूज़। सो इंडिकेशंस क्या होते हैं? स्पेसिफिकली इफ़ abnormal हेड साइज जो है एंड और abnormality ऑन द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर सर का साइज abnormal है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कुछ abnormality मिल रहा है, तब हम लोग MRI करवाएंगे ब्रेन का। देन वी हैव क्लूज ऑन हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन। देखो फिर उसके बाद क्या है? मेटाबॉलिक टेस्ट जैसे अमोनिया, बाइकार्बोनेट, लैक्टेट, शुगर, ब्लड, TMS, यूरिन CMS, ये सब कब करवाएंगे? क्लूज ऑन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, जैसे रिकरेंट एंसेफेलोपैथी हो रहा है बच्चे को, वॉमिटिंग हो रहा है, और गैनोमेगाली मिल रहा है, कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी, ये सब मिल रहा है, तब हम लोग ब्लड टेस्ट और ये सब करवाएंगे। देन जेनेटिक, cytogenetic study, karyotyping. So developmental delay without a morphic feature. Then thyroid function test जो होता है, blood and micronutrient levels. So if indicated clinically. Hey Shashank, can you hear me? So electrophysiological test जो होता है where indicated, इंटरो समथिंग समथिंग विजुअल समथिंग, ये सब में करवाते हैं। सो क्लिनिकल फीचर क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है? सो पेशेंट कैसा प्रेजेंट करेगा? सो ऑनसेट का क्या होगा? बिफोर 3 years ऑफ एज होगा, इम्पेयर्ड वर्बल, बोल नहीं पाएगा, जेस्चरल कम्युनिकेशन जेस्चर से भी नहीं कर पाएगा, डिफेक्ट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोकेसी,
मतलब आप उसको कुछ बता रहे हो, उसको वो रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाएगा ठीक से कि क्या उसको चाहिए, क्या क्या बताना चाह रहा है। स्टीरियोटिपिकल एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न मिलेगा बच्चे में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या होगा फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो मेडिकेशन में एंटी साइकोटिक देंगे, क्या क्या, ओलैंज़ेपिन या फिर रेस्पेरिडोन देंगे। एंटी साइकोटिक्स क्यों? साइकोटिक इसलिए आई गेस क्योंकि उनका जो एसोसिएशन है विथ रियलिटी इट एंड्स, वो ख़त्म हो जाता है, तभी वी गिव एंटी साइकोटिक, राइट। सो एंटी साइकोटिक देंगे, देन मिथाइल फेन फेनिडेट देंगे, देन अल्फा टू एगोनिस्ट जैसे कि क्लोनिडिन, एटोमोजिन देंगे। सो एंटी साइकोटिक हम लोग एनजाइटी के लिए देते हैं, एग्रेशन के लिए देंगे, रेपिटेटिव बिहेवियर जो हो रहा है उसके लिए देंगे। मिथाइल फेनिडेट जो है इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के लिए देंगे। अल्फा टू एगोनिस्ट जो है क्लोनिडिन और ये सब, ये हाइपर एक्टिविटी के लिए देंगे। सो बेसिकली आप देखोगे ना तो ऑटिज्म में भी हाइपर एक्टिविटी है, इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी, देन इम्पल्सिवनेस है, एनजाइटी है, एग्रेशन है, रेपिटेटिव बिहेवियर है। देन वी ऑल्सो गिव मेलाटोनिन फॉर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। वी गिव आयरन सप्लीमेंट इफ डेफिशिएंसी इज डॉक्यूमेंटेड। सो अटेंशन, अब हम लोग ADHD में आ जाते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है? सो सॉरी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है is the most common neurobehavioral disorder of the childhood. Its prevalence in India is estimated at 1.3 per 1000. मोस्ट कॉमन न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है ADHD। इसका प्रेवलेंस इज 1.3, 1000 में 1.3 बच्चों को ADHD आपको देखने को मिलेगा। इट्स क्वाइट हाई। या द प्रेवलेंस इज हाई हियर इन ADHD, राइट। नाउ लेट्स सी, एक सेकेंड, अब लेट्स सी कि द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो रिकमेंड करता है इवेलुएटिंग एनी चाइल्ड बिटवीन 4 से 18 साल का है ऑफ एज ऑफ ADHD विथ एकेडमिक एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। जिस भी बच्चे को एकेडमिक में या बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में, विथ सिम्टम्स ऑफ इन अटेंशन, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, तो उनको हमें ADHD के लिए चेक करना है, ठीक है। ये सब तो टीचर्स को पढ़ाना चाहिए ना, बिकॉज दे विल ओनली बी एबल टू डायग्नोस, एंड पेरेंट्स तो सारे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, बट देन टीचर्स, सारे टीचर्स को हम लोग ADHD एंड एवरीथिंग का बता सकते हैं, वी कैन टेल अबाउट देम। सो डायग्नोसिस आप ADHD का कैसे करोगे? सो ADHD इज डायग्नोस्ड क्लिनिकली। जो DSM-5 का क्राइटेरिया है, रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन अटेंशन, देन हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी डोमेन्स में। द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स कैन बी अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज। जो ऑटिज़म था ना वो 3 साल के अंदर हो जाता है अगर होना होगा तो, बट जो ADHD है ना वो 12 साल तक हो सकता है, उसका ऑनसेट हो सकता है 12 साल तक। एंड दे शुड बी प्रेजेंट इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट सेटिंग्स इंटरफेयरिंग विथ सोशल एकेडमिक, मतलब घर में भी प्रेजेंट है, ऐसा घर में भी कंप्लेन आ रहा है, स्कूल में भी आ रहा है, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में भी आ रहा है। सो द एसोसिएटेड मॉर्बिडिटीज आर समराइज्ड इन टेबल दैट। लेट्स सी द कोमॉर्बिडिटीज। सो ADHD वाले बच्चों को क्या कोमॉर्बिडिटीज़ होता है? स्लीप प्रॉब्लम उनको होगा, एन्यूरोसिस मतलब रात में सूसू कर देंगे, इनको इनकोप्रेसिस, ओबेसिटी मोटापन होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा बच्चों को, देन बिहेवियर कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी साथ में हो सकता है, टिक्स हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, डिलिंक्वेंसी हो सकता है, एनजाइटी, बाइपोलर इलनेस भी हो सकता है। ADHD वाले बच्चे को कोमॉर्बिडिटीज़ आते हैं। सो देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि
ADHD वाले जो होते हैं क्लिनिकल फीचर्स एक बार देख लेते हैं। तो ऑनसेट जो होता है अप टू 12 ईयर्स तक हो सकता है, प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, देन इंटरफेयरिंग विद सोशल एकेडमिक ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, इन अटेंशन जो है वो होगा, डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, प्रोन टू केयरलेस मिस्टेक्स, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। फिर हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ऑफन ऑन द गो, फिडजिटी, देन इम्पल्सिवनेस, इंट्रूसिव, interruption and cannot wait for turn. So if we see कि इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेट्स सी द मैनेजमेंट. सो द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट इज साइकोथेरेपी tailored for each individual and the family. In patients with inadequate response to psychological interventions, drugs like methyl phenidate and atomic zidine are used. सो ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि कॉमन डेवलपमेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर, अप्रोच टू कॉमन डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, प्रीडोमिनेंट मोटर डिले हुआ है, मोटर डिले, तो क्लिनिकल कंडीशन क्या कंसिडर कर सकते हैं, सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस या रिकेट्स, ये डायग्नोस कर सकते हैं. प्रीडोमिनेंट स्पीच में डिले हो रहा है, अगर स्पीच में डिले हो रहा है ना तो वी विल गो फॉर ऑटिज्म या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट. ठीक है, स्पीच, बोलना लेट से, पता है बोलना लेट से और कौन एक इंसान शुरू किया था, आइंस्टाइन, 5 साल तक नहीं बोला था. देन प्री स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस, सो क्लिनिकल कंडीशन क्या क्या कंसिडर करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है अगर स्कूल में ठीक से नहीं कर पाए तो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है या ADHD हो सकता है. अब ग्लोबल देखो, ऑटिज़म के लिए ना स्पीच डिले होगा, उधर से सबसे पहले आप डायग्नोस कर सकते हो, बट ADHD के लिए ना प्री स्कूलास्टिक परफॉर्मेंस में, स्कूल में परफॉर्मेंस देख करके कि अटेंशन ही नहीं कर पा रहा ज़्यादा. ADHD में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अटेंशन का, इसीलिए उसके नाम में भी अटेंशन डेफिसिट है, एंड हाइपर एक्टिविटी का होता है. सो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, अगर 2 या 2 से ज़्यादा में अगर डेवलपमेंटल डिले, कैसे पता चलेगा, विथ डिसमॉर्फिज्म, जेनेटिक और क्रोमोसोमल कॉज की वजह से, विथ मोटर इम्पेयरमेंट जैसे सेरिब्रल पाल्सी है तो ऐसा होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस की वजह से हो सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है. सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, जैसे डिसलेक्सिया, persistent impairment in reading, writing, जैसे dysgraphia, and arithmetic dyscalculia skills in an individual with preserved cognition, vision, hearing and adequate opportunities. क्या 3 चीज़ में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या 3 चीज़ आता है, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा अर्थमेटिक. रीड नहीं कर पाएगा उनको डिसलेक्सिया कहते हैं, राइट नहीं कर पाएगा डिस्ग्राफिया कहते हैं, और जो मैथ्स नहीं कर पाएंगे उनको डिसकैलक्यूलिया कहते हैं. It affects 5 to 15% of the school going children. Dyslexia accounts for 80% of all the specific learning disabilities. These disorders are probably caused by functionally disrupted networks of cerebral cortex with intact anatomy. It's such a heartbreaking thing to read. Oh my god, हमारे जो बच्चे हैं कितना ज़्यादा सफ़र करते होंगे. ये जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ADHD, ऑटिज़म, ये सब कितना कॉमन है बच्चों में, और वो तो कम्युनिकेट करना भी नहीं जानते कि हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर नॉट एबल टू डू दिस. एंड वी, बच्चों में क्या होता है, पेरेंट्स कंपेयर करते रहते हैं, उसका बच्चा देखो, इसका बच्चा देखो, 3-4 साल से ही कंपेयर करने लग जाते हैं. वो सोचो जो पढ़ ही नहीं पा रहा है उसको कितना खुद में प्रॉब्लम होता होगा, एंड देन कंपैरिजन. ओ माय गॉड, आई कांट इवन थिंक बच्चे किस पेन से गुजरते होंगे. इट मस्ट बी सच अ हार्ड थिंग फॉर एवरी चाइल्ड. नाउ डायग्नोसिस कैसे करेंगे. सो फीचर्स सजेस्टिव ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड्स रीडिंग स्लोली एंड इनकरेक्टली. ये सारे टीचर्स को पता है, अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों के लिए. देयर शुड बी अ चैप्टर कि जिसमें दे आर टीचिंग कि बच्चों को किस तरीके से यू हैव टू डायग्नोस अगर उन्हें कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो.
then skipping lines while reading aloud, then making repeated spelling mistakes, untidy, illegible handwriting with poor sequencing. पता है मुझे भी एक प्रॉब्लम है, लाइक आई के नॉट, आई एम नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट वेरी वेल अगर कोई एक सेम लेटर से शुरू होता है, जैसे कि मैं पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, इन दोनों को मेरे को समझने में शायद आज भी ठीक से हम समझ नहीं पाए, बट आई हैव एसोसिएटेड सम, ये अगर कोई सेम चीज़ से कोई वर्ड शुरू हो रहा है ना, आई हैव सो मच प्रॉब्लम कि वो क्या है, उसमें उसमें इमेज बनाने में आई हैव सो मच प्रॉब्लम। वी और वाई आज तक मेरे को ठीक से ये नहीं हुआ। देन कुछ चीज़ें तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट दैट्स वेरी माइनर, सो मेरे को उतना दिक्कत नहीं होता। आई एम एबल टू डू, जैसे लेफ़्ट और राइट तो मैंने अपने हाथ से एसोसिएट कर दिया, दिस इज़ राइट तो ये इधर बता रहा है। जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होता होगा कितना वो लोग लोनली और डरे हुए फील करते होंगे वो बच्चे। सो अगर वो धीरे धीरे पढ़ रहे, इनकरेक्टली पढ़ रहे, अगर लाइन स्किप कर रहे जब बोल बोल के पढ़ रहे तो, और बार बार रिपीटेड स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे, अनटाइडी इलिजिबल हैंड राइटिंग है with poor sequencing, inability to perform even small mathematics, थोड़ा भी मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, तो DSM-5 क्राइटेरिया जो है SLD का, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का, रिक्वायर्स फुलफिलिंग ऑफ अ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन रीडिंग, writing and arithmetic skills, and these impairments should persist despite intervention targeting the specific learning फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने तक इंटरवीन किया उसके बाद भी प्रॉब्लम है, देन वी कैन डायग्नोस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड रिमीडियल एजुकेशन विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ स्कूल एंड पेरेंट्स। सो क्लिनिकल अप्रोच टू कॉमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम इज समराइज्ड इन दिस। सो टिक डिसऑर्डर और स्टीरियो टाइप्स क्या होता है? सो टिक इसकी कोई भी अबनॉर्मल जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं टिक। आर एब्रप्ट, ठीक है, एब्रप्ट ऑनसेट, फास्ट एंड paroxysmal, नॉन रिदमिक मोटर और या फिर वोकल मैनिफेस्टेशन विच मे बी सिंपल या कॉम्प्लेक्स। द एज ऑफ ऑनसेट इज 4 to 6 years which peaks at 10 to 12 years and significantly attenuation by 18 to 20 years. The prevalence is around 10 to 15% with high rates in boys. अच्छा है कि 18 से 20 साल के बाद ये कम होने लग जाता है। टिक्स आर ऑल्सो वेरी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक टाइप का है, जैसे कि अचानक से ऐसे ऐसे करके, और नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिदमिक है, एंड अचानक से आ जाता है, फास्ट मूवमेंट्स होता है, वोकल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकता है कुछ जैसे ऐसे। और सबसे कॉमन किस सिंड्रोम से होता है? सो टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम जो होता है ना, इज कैरेक्टराइज बाय ऑनसेट बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रेजेंस ऑफ बोथ मोटर एंड वोकल टिक्स, इसमें दोनों प्रेजेंट होता है, मोटर भी एंड वोकल, परसिस्टेंस बियॉन्ड 1 year इंक्लूडिंग द वार्निंग वेनिंग फेज, फिर उसमें कम भी होता है। टिक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक हंटिंगटन या फिर विल्सन्स डिजीज़ एंड विथ पैरा इन्फेक्शियस इलनेसेस जैसे कि पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर associated with streptococcal infection, pandas, okay, yeah. So it is important to differentiate stereotypes from tics. स्टीरियोटाइप्स को टिक्स से डिफ्रेंशिएट करना है। सो ऑल द स्टीरियोटाइप्स मे हैव सिमिलर वोकल, स्टीरियोटाइपीज may have similar vocal and motor manifestation. Classically they are rhythmic, वो rhythm में होता है, and distractible and usually remains stable over a time period. Unlike tic which may evolve temporarily, stereotypes usually have an early onset before 3 years of age, and along with neurodevelopmental disorder may affect normal children as well. So management क्या है टिक और स्टीरियोटिप्स का? So the essential component is behavioral therapy.
मेडिकेशन लाइक हैलोपेरिडोल और क्लोनिडीन जो होता है कंसिस्ट इन सिचुएशंस वेयर द टिक्स आर सोशली एंड फंक्शनली डिसेबलिंग डिस्पाइट एडिक्वेट बिहेवियरल थेरेपी. अदर डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या क्या है? So, defiant disorder. So, oppositional defiant disorder is a repetitive and persistent pattern of opposing, defiant, disobedience, disruptive behavior towards authoritative figure, persisting for at least 6 months. Many children are later diagnosed with conduct disorder. Diagnostic criteria for labeling the condition have been developed. Oppositional defiant disorder results from the interplay of factors in child's character, parental interaction, and environmental factors. Family history of mental health problems such as depression, ADHD, antisocial personality is often seen. The management should focus on alleviating the risk factor of stress that might contribute to oppositional behavior. Use of stimulants. Uh, Medication is effective in patients with ADHD. सो ये वाला देख लेते हैं. टिक्स का हम लोगों ने कुछ नहीं देखा था. मोटर टिक एंड वोकल टिक होता है. तो मोटर टिक में आई ब्लिंकिंग होता है, नेक का जर्किंग होता है, शोल्डर का श्रगिंग होता है. कॉम्प्लेक्स ये सिंपल हो गया. कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? फुट टैपिंग होगा, एको प्रैक्सिया यानी इमिटेटिंग अदर्स एंड कॉप्रोप्रैक्सिया ऑप्सीन जेस्चर ये सब होता है. वोकल टिक्स में क्या होता है? सो सिंपल क्या होगा? थ्रोट क्लियरिंग, स्निफिंग, कफिंग. सो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैप्रोफीलिया यानी ऑब्सीन वर्ड, कॉप्रोलैलिया, एकोलैलिया यानी रिपीटिंग हर्ड फ्रेजेस और वर्ड्स, पैलिलालिया ये रिपीटिंग ओन वर्ड्स और फ्रेजेस. ये होता है टिक्स में ना. टिक्स का कुछ और देख लेते हैं. तो टिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी जो होता है वो हो सकता है एनजाइटी, डिप्रेशन, इसके साथ हो सकता है, कोमॉर्बिडिटी है. देन अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर टेंस एडीएचडी हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है, टिक्स देख लिया. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कि राइटिंग, रीडिंग या मैथ्स में प्रॉब्लम होगा ना. तो इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हो सकता है? एपिलेप्सी, एडीएचडी और ऑब्सेसिव ओसीडी ये तीन हो सकता है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसग्राफिया, इलेजिबल हैंड राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड डिसकैलक्यूलिया, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस. ये हो गया हमारा. ठीक है, अब हम लोग कंडक्ट डिसऑर्डर देख लेते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है. सो कंडक्ट डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज दैट कॉजेस डिसरप्शन इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट such as home, school, and neighborhood. The overriding feature is the repetitive, persistent pattern of behavior that violates societal norms and the right of other people for a period of at least 1 year. इसको डायग्नोस करने के लिए 1 year है. पहले जितना भी पढ़ा 6 month था. मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी एंड साइकोथेरेपी. ठीक है. नाउ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है? चिल्ड्रन हु शोज ऑपोजिशनल डेफियंस behavior or conduct disorder and come into conflict with juvenile justice system are called juvenile delinquents. The term refers to a person under 18 जो होते हैं of age who is brought to the attention of the juvenile justice system for committing criminal act और displaying other illegal behavior जैसे कि use of alcohol या फिर illicit drugs. Family and parenting intervention have been shown to reduce the risk of reincarnation and criminal behavior by juvenile delinquents. In some cases, placement in foster care is recommended with similar interventions administered by the foster family.
सो म्यूचेंसन बाई प्रॉक्सी, ये क्या होता है? ये तो मैंने सुना है, म्यूचेंसन्स बाई प्रॉक्सी. Murchison syndrome by proxy is a disorder in which a caregiver, usually mother जो होती है, deliberately makes up a history. ओ अच्छा, मैंने forensic में पढ़ा है. Makes up a history of illness in her child एंड और हार्म्स द चाइल्ड टू क्रिएट द इलनेस. और फिर वो आती है सीख करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए. द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम म्यूचिन्सन सिंड्रोम in which a person self induces or acts out of illness to gain medical attention. In Murchison by proxy, the abusing caregiver gains attention from the relationship formed with healthcare providers or her family as a result of problem created. So, confirmation of diagnosis needs careful history and reviewing of part and currently hospital records. Once the diagnosis is made, the offering caregiver should be confronted and separated from the child एंड प्रोवाइडेड साइकोथेरेपी. सो पैरासोमनियास क्या होता है? पैरासोमनियास जो होते हैं आर डिफाइंड एज abnormal behavioral and motor manifestation seen in sleep. During the first half of the sleep, the non rapid eye movement जो होता है, non NREM, parasomnias predominate, which are more common and consists of sleepwalking, awake and ambulatory, confusional arousal, awake but not ambulatory, sleep terrors यानी terrorized child, inconsolable, and presence of a spine chilling scream. सो द रिलेटिवली अनकॉमन REM जो होता है, पैरासोमनियास आर सीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द स्लीप एंड कंप्राइज of nightmares, unpleasant dreams, and bizarre movements, behavioral manifestations. The child is more likely to remember REM than NREM, parasomnias, or on waking up. The conditions are self-limiting, अपने आप ठीक हो जाता है. The management is targeted at reassurance and management of stress. If any, benzodiazepines may be occasionally be used. ठीक है. Now, eating disorder. So eating disorder में क्या है? This group consists of primarily of two disorders, anorexia nervosa और bulimia, that chiefly affects girls and have been in common a disturbed body image perception. एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है 15 से 19 साल की लड़कियों को अफेक्ट करता है. कैरेक्टराइजिंग फीचर होता है द इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग फैट. एनोरेक्सिया नर्वोसा में फैट, इवन दो द चाइल्ड इज अंडर वेट, बॉडी वेट लेस देन 85% of expected. Two stereotypes are recognized, which either restricted eating or increased physical activity, induced vomiting, or use of laxatives and diuresis may be present. So, complications include secondary amenorrhea, metabolic complications related to malnourishment. now बुलेमिया क्या होता है? अफेक्ट करता है 10 से 19 साल की बच्ची लोग को. ये पहले ही शुरू हो जाता है बुलेमिया. चिल्ड्रन चीफली गर्ल्स में होता है. दे आर रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग अल्टरनेटिव विथ inappropriate compensatory behavior such as self-induced vomiting, misuse of laxative, diuretics, enemas, each occurring at least twice a week for 3 months. Depression, anxiety, suicidal ideation, and OCD are often present. Management of both conditions focuses on psychotherapy along with nutritional rehabilitation. So treating comorbidities and complications. Pica क्या होता है? Pica is a persistent ingestion of non-nutritive substance. I know someone who has pica. Maybe it's very close to me. Maybe it's me.
ingestion of non-nutritive substance such as plaster, charcoal, paint, solid for at least 1 month, inappropriate to child's development level, and cultural practices. It is common in children less than 5 years of age. Poor socio-economic state रहेगा, malnourished होगा, iron deficiency आर द कॉमनली एसोसिएटेड डेवलपमेंटल डिले जो होता है साइको सोशल स्ट्रेस जैसे मेटरनल डिप्रीवेशन या फिर पेरेंट नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़ अगर हुआ है और अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कैन प्री डिस्पोज टू पाइका चिल्ड्रन विद पाइका आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर लेड पॉइजनिंग and parasite infestation. Management comprises behavioral modification, alleviating the socio psychosocial stress, screening for lead poisoning, deworming and iron supplementation. ना टेम्पर टैंट्रम क्या होता है? सो टेम्पर टैंट्रम जो होता है ना एक चाइल्ड का रिस्पॉन्स होता है टू फिजिकल या फिर इमोशनल चैलेंजेस बाय अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स जैसे कि येल करना, बाइट करना, क्राई करना, किक करना, पुश करना, थ्रो करना, ऑब्जेक्ट सबको हिट करना, हेड को बैंग करना. ये चाइल्ड का रिस्पॉन्स है किस चीज़ से? टू फिजिकल या फिर इमोशनल चैलेंज जो आता है बाय अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स है ये सब. So tantrum typically begins at 18 to 36 months of age and gradually subsides by the age of 3 to 6 years. Parents are counseled to handle this behavioral problem strategically by staying calm. Parents को calm रहना, firm रहना and consistent रहना so that a child is unable to take advantage from such behavior. The child should be protected from injuries, injuring himself and others. Distraction and time out technique are useful. सो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ये अब खतरनाक हो जाता है. सो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आर रिफ्लेक्सेस इवन टिपिकली इनिशिएटेड बाय provocation that causes anger, frustration or pain, making the child cry. द क्राइंग स्टॉप्स एट फुल एक्सपीरेशन. जब एक फुल एक्सपायर करके देता है तो रोना बंद हो जाता है. एंड द चाइल्ड बिकम्स एपनिक, सांस नहीं लेता है, फिर साइनोटिक, पूरा ब्लू हो जाता है, पेल हो जाता है. इन सम केसेस चाइल्ड जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और हाइपोटोनिक हो जाता है. पूरा मसल जो है होता है वो पूरा लूज हो जाता है. प्रोलॉन्ग्ड इवेंट में ब्रीफ टोनिक क्लोनिक मूवमेंट में हैपन. ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो होता है वो रेयर होता है बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज और पीक करता है 2 साल में और अब ख़त्म हो जाता है 5 ईयर्स ऑफ एज में. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है कि बच्चे को सीजर आ रहा है, कार्डियक एरिथमिया हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ अ provoking event या फिर stereotyped pattern of event helps in distinguishing breath holding spell from seizure. In relevant clinical scenarios, seizures and cardiac arrhythmias जो होते हैं include long QT syndrome should be ruled out. The essential component of management is parental reassurance. The family should be advised to be consistent in handling the child, to remain calm during the event and turn him sideways so that the secretions can drain and avoid picking up the child, since this decreases the blood flow to the brain. The family should avoid exhibiting undue concern nor give the child's demand if the spell was provoking by anger या फिर frustration. Now thumb sucking क्या होता है? The entirety is normal in infant and toddlers. It peak in 18 से 21 month of age, usually disappears by age of 4 years. It's persistent in older children, is socially unacceptable and can lead to dental malalignment. In children below 4 years, parents should be reassured. Beyond 4 years, the child should be motivated to refrain from this habit, and both positive and negative reinforcement can be used. Now let's read about stuttering, जो हगलाना बोलते हैं जिसको. So stuttering is a defect in speech characterized by hesitation या फिर spasmodic repetition of some syllable with pauses.
This is difficulty in pronunciating the initial consonant caused by spasm of lingual and palatine muscle. Spasm हो जाता है lingual और palatine muscle का. It can affect up to 5% of the children between 2 to 5 years of age. In this age group, parents should be reassured as most of them show resolution. 2 से 5 तक ठीक है. अगर वो persist करता है beyond and appears after 5 years of the age, expert opinion should be sought. So एन्यूरेसिस क्या होता है? एन्यूरेसिस इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ यूरिन, सुसु रात में कर देना, इन द क्लॉथ्स बियॉन्ड एन एज व्हेन ब्लैडर कंट्रोल शुड बी स्टैब्लिश्ड. यूजुअली 5 साल के बाद भी सुसु कर रहा है तो बोथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर और फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे हाइपोसेक्रीशन ऑफ वेजोस्पैस्म can be seen in affected individual. Enuresis जो होता है may be primarily या secondary loss of control after month or more. पहले शुरू में आ गया था कंट्रोल, फिर बाद में लूज हो गया तो उसको डायरेनल या फिर नॉक्टर्नल हो सकता है, मतलब पूरे दिन रहेगा या फिर रात में ही. Monosymptomatic nocturnal enuresis is the commonest variety. Enuresis, diabetes, tract abnormalities, infections, bowel bladder dysfunction should be ruled out. So the most management is behavioral therapy with positive reinforcement. Desmorpressin is result to behavioral interaction. The last one is encopresin. Encopresis is defined as passage of stool in clothes beyond an age have been achieved, usually 4 साल के बाद. ये पॉटी कर देना. एनकोरेसिस it may be retentive, associative primarily, never achieved with bowel control. यह secondarily हो सकता है, loss of control after initial phase 6 महीने तक आ गया था, उसके बाद फिर लूज हो गया. प्राइमरी जो associated with constipation, while secondary is associated with significant behavioral therapy with positive reinforcement and treatment of constipation is necessary. We have one more thing: mental health in children and adolescents. Disease study recent report that mental health disorder accounts for disability in children and adolescents. So the WHO has survey data in mental health action plan 2013 से 20. However, have such data in a recent concluded prospective cohort study in Caucasian mental disorder under 18 years of age were estimated to be 15%. बहुत ज़्यादा है. और स्किज़ोफ्रेनिया जो है, मूड एंजाइटी और OCD were more common in females, whereas developmental and behavioral ability, ASD, ADHD, oppositional defiance, conduct disorder in males. So they are reported a trend of delay behavioral disorders in girls. So in this systematic review, India reporting prevalence of mental health disorders in children and adolescents are estimated in the community to 23.3% in school. Similar rate Latin American countries. The National Survey 2000 health disorder to be 7.3 in adolescent, 13 affected twice as much as the rural population. The most intellectual disability, ASD. This survey reported tobacco person. WHO reported high prevalence of suicide in India and
The economic burden of mental health disorder is disease and can be as high as 4% gross. There is considerable gap between the need and service in mental health, more so in the low and epidemiological studies will help in prioritizing resources, research, and public health decisions. Thank you so